Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Right? Yes or no? I think I'm properly audible and properly visible. Hello, Aditya. So I think everything seems to be fine. So let's move forward with our weekly current affairs revision session. है ना? I think you guys are celebrating Holi, right? Yeah, like Holi may be confusion, and there are some part of the India which is having Holi today, and some part of India is having Holi tomorrow, and then there is some part of India जो कि अभी पंचमी में खेलेगी. For example, me, like on Indore. Hello Deva, hello Devesh, hello Toin. Right? So overall fashion में ये सारी की सारी चीजें जो है अभी confusing में. But hello Shreya. अच्छा आज वो है चंद्र ग्रहण इक्लिप्स राइट. ओके सो है कई जगह पे मान रहे हैं कई जगह पे नहीं मान रहे हैं बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं दूंगा because कल शायद अपन नहीं मिले एंड आई विश कि आप जिस भी एग्जाम की जिस भी कॉलेज की जिस भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी चीज के लिए राइट तो नेक्स्ट जो आपका होली है उस टारगेट की कंप्लीट होने के साथ राइट आप मनाएं एंड आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज और ये सारी चीजें मिल जाए. सर वो तो हर फेस्टिवल में होता है. या थैंक्स टू पंडित जी लोग है ना इनके अपने अपने वो होते हैं. आई मीन वन ऑफ पंडित जी आई नो ही सेड कि आज सेलिब्रेट कर सकते हैं बट देयर आर सर्टेन कंडीशन. फिर ही टोल्ड अस अबाउट द कंडीशन वी डिसाइडेड कि हम कल ही कर देंगे. उनके पास सोल्यूशन भी होता है और प्रॉब्लम भी दे क्रिएट बाय देमसेल्फ. खैर jokes apart, let's move for what we are having today. So weekly current affairs का सेशन है आज अपना and what we saw in the last week. Yes, you will say, sir, USA, Iran, and Israel war. And this is actually being escalated to the full scale. For now, अभी अपन live हैं उसके पहले I was reading some particular editorial in which this is the very first time when America wants a ceasefire. And Iran is not ready for the ceasefire. बताऊंगा इसके पीछे की भी कहानी क्या है. So first let's have a weekly recap. Second most biggest news was Arvind Kejriwal case. राइट. यस अरविंद केजरीवाल को सीबीआई वाले केस के लिए जो एक्साइज ड्यूटी एक्साइज केस था 2021 2022 वाले उसमें एक क्लीन चिट मिल चुकी है. द केस अगेन वाज फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट और वो कहाँ चला गया हाई कोर्ट में. बट द लोअर कोर्ट एक्चुअली freed Arvind Kejriwal, Manoj Surya and some other 21 people who were accused in that particular case. So these were the two biggest news in Indian concern. Right. Third news was Modi ji's Israel visit. Right. Israel visit was concluded and completed. Modi ji went over there. He had some fun. He addressed the Knesset. He got the award. We had certain defense deal, advanced technology, agriculture technology deal. He came back and the war started. Right. Apart from this, we had some match. है ना. तो मैच में भी हमने काफी मजे किए. संजू सैमसन प्लेड वेरी वेल. is Indian political news is important? Definitely, but say हर टाइप की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है but it must have information, right? There are two kind of news which you find in on the daily basis. एक न्यूज जो है स्टेटमेंट बेस्ड होती है. फॉर एग्जांपल लेट्स से मोदी जी मेड सर्टेन स्टेटमेंट ड्यूरिंग द बंगाल इलेक्शन और तमिलनाडु इलेक्शन और केरला इलेक्शन. On the other half, the leader of opposition, Rahul Gandhi, made some statement in different election. वो statement based news है. They cannot create a factual information. वो फैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती जो टेक्निकली आपको क्या दे दे. व्हाट वी कैन से इंफॉर्मेशन दे और फैक्ट्स दे दे जिसपे एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा. बट जो इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज है उसमें हो सकता होता है दे गेट सम फैक्ट्स और फैक्ट्स से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं. सो सारे न्यूज जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पॉसिबल है दे आर इम्पोर्टेंट. हमने शायद एक बार करंट अफेयर्स के सिलेबस की भी बात की थी व्हेन वी स्टार्टेड द हिंदू एनालिसिस. तो हमने एक पूरा का पूरा दिन निकाला था इस चीज के लिए. एक पूरा सेशन था कि हाउ एंड व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड. राइट. तो एक बार उसको देख लेना बच्चे. उसमें से तुमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी.
So Israel visit was concluded, right? जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है, इंडिया की विजिट में है, उनके इंडिया और कनाडा के बीच में देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड एफटीए, डिफेंस डील, यूरेनियम डील, कई ऐसी चीजें हुई हैं जो अभी न्यूज में हैं. देन वी सॉ बंगाल एसआईआर दैट इज concluded and उसमें approximate 60 lakh voters, their name was what we can say cut down from the electoral roll. And नागपुर, आंध्रा, there are places जहाँ पे either firecracker factory में और ammunition factory में blast हुए where we lost several people, right? The road accidents are regular. ये तो वीकली न्यूज में अब हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते, राइट? पीपल आर फाइटिंग ऑन रिलीजन, दैट इज रेगुलर, है ना? पीपल आर यूजिंग एआई फॉर बैड रीजंस, दैट इज आल्सो रेगुलर. AI summit concluded, and there was a Congress protest, Indian Youth Congress protest. So Delhi police registered a case against it. They went to Himachal to arrest some of the candidates from the protest. There, the police arrested the Delhi police. Then Delhi police gave an FIR copy and they were left. Then उसके बाद वापस they got a new condition, फिर उनको arrest कर लिया गया. So there was a huge drama that was going on, राइट? सो वो कंटिन्यू चलता रहता है. कुल मिला के एक वाइब्रेंट वीक रहा है एंड मजेदार वीक रहा है, राइट? पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. एक सिंपल सा तरीका है इसको सुधारने का, राइट? वी लाइक एज अ जनरेशन हम एक हॉरिजॉन्टल जनरेशन थे जहाँ पे हमें किताबें मिलती थी और हम किताबों को देख के पढ़ते थे. यू एज अ जनरेशन इज अ वर्टिकल जनरेशन जो शॉर्ट्स में डील करते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स में डील करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में डील करते हैं. स्टॉप दैट वर्टिकल लाइफ एंड गो फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइफ, यू विल गेट योर स्पैन बैक, राइट? इससे बहुत फायदा होगा, भरोसा करो मेरा. चलो, लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट न्यूज ऑफ टुडे, दैट इज यूएस इजराइल वर्सेस ईरान. यस, आई होप यू लाइक द मीम. हाय ना. Okay. This was circulating on the like regular basis. Twitter and Reddit में ये भर भर के आपको मिल जाएंगे. And that was correct though, right? इसराइल सॉरी यूएसए के साथ एक प्रॉब्लम है. यूएसए उन्हीं कंट्रीज के अगेंस्ट अटैक करता है which the countries which are about to make nuclear weapon. The countries which already have a nuclear weapon like North Korea, Russia, China, the US doesn't attack on them. That's fact. ठीक है. चलो, लेट्स कम टू द पॉइंट, द डेवलपमेंट, है ना? ठीक है. As of early March 2026, a major regional war erupted following a massive coordinated joint attack by US and Israel on Iran on February 8, 2028. Codename Operation The Roaring Lion Israel and Operation Epic Fury US. The campaign aims to regime change after the failure of nuclear negotiation and a brutal crackdown by Iranian regime on the domestic protest. This is not my language. This is the language from the Americans in Israel. They clearly mentioned कि हमने एक coordinated joint attack किया है ईरान में, राइट? जहाँ पे इसराइल का जो ऑपरेशन था उसे रोरिंग लायन बोला गया. ऑपरेशन इपिक फ्यूरी जो है वो यूएस का नाम था. They wanted to carry out that particular operation for the change in a regime, है ना? उनका ये मानना था कि जिस तरीके से regime ने protesters को क्रैक डाउन किया, जिस तरीके से उनकी डेथ हुई protesters की, the way the nuclear negotiation was came like resulted in a failure. हम चाहते हैं कि इस ईरान जो है, ईरान में एक regime change हो जाए और नई leadership establish हो जाए, right? Question is, who the hell are you कि तुम चाहते हो, राइट? यूएसए और इसराइल के पास खुद है तो ईरान को बनाने से क्यों, क्या दिक्कत है, राइट? बच्चे, listen to me. If I am in a like a hall with a gun, I'm the most powerful person. If somebody else is also having gun, so he will become another powerful person and it will polarize the entire hall. So they don't want कि other people should get the power.
Okay, that is the reason. How to cover MSCET law 5 years current affairs? कुछ नहीं, like monthly जो current affairs PDF है उसको पढ़ो. That will do. So they said to change the regime in Iran, we are attacking it. Right. अब ये कोई नया वो नहीं था. You know, Iran, Israel, they have like decade-long battles based on strategic security, ideology, right? Israel हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को एक existential threat मानता रहा है. While Iran opposes Israel existence and supported anti-Israel proxies like Hezbollah, Houthis. So is Iran and Israel, they are fighting. That is something जो कि दिखता है. They are somehow close to each other. They are neighbors, close to neighbor to each other, right? Apart from this, they are the two most powerful, क्या कहना चाहिए, countries in the Middle East, right? तो इनके बीच में लड़ाई झगड़े आज के नहीं है, बहुत लंबे चल रहे हैं. बट चाचा जो हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के चले आए. And actually, US was fooled by Israel. I'll tell you some statements provided by different leaders. You'll understand how US was fooled and now ये यूएस जो है कि ईरान इसराइल और यूएस वॉर जो है वो ईरान यूएसए के गले की हड्डी बन चुका है ना. The Iran Israel were fighting in the last year 2025. They also had direct fight between, like we had seen the direct fight 12 days war between the Israel and Iran. बाद में ceasefire हुआ था. Right? So ये सारी चीजें नई नहीं है. That was old. But the problem was, we, like Iran, Israel, USA, they were in a peace talk, and the Oman's minister was telling that peace talk is about to conclude it, and suddenly out of nowhere, Americans and Israelis attacked on Iran, and they killed their supreme leader. Yes, Ayatollah Ali Khamenei. So what is trigger and escalation is this in this battle? So on क्या कह रहे हो, US इसराइल को support क्यों करता है? So and there are lots of theories, right? One of the theory is Israelis are good blackmailers. So they have secrets from the US office and US leadership. So they want whatever the decision they want, they can make those decisions. They can force Americans to make those decisions. Right? ये theory है बस. Second thing, Americans को आदत है दूर के फट्टे में टांग अड़ाने की. दूसरा तो ठीक है, दूर के फट्टे में टांग अड़ाने की. I mean, the Americans and Iranian has nothing to do with each other. They're like almost 12,000 kilometers apart from each other. बट है आदत तो है, क्या कर सकते हैं. खैर, लेट्स डिस्कस द ट्रिगर पॉइंट एंड एस्केलेशन की अगर हम बात करें तो ऑन 20th of February Israel and the United States launched a large coordinated attack, right? Iran supreme leader Ayatollah Ali Khomeini was killed in initial offense when his compound was struck, a historical unprecedented event. Iranian state media confirmed his death. तो जैसे ही सुप्रीम लीडर की डेथ हुई, राइट, Ayatollah Ali Khomeini ki, at that particular point, this particular strike came into the point of no return, right? Yes. यूएस की तरफ से अपनी जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी थी, अगर मैं उसकी बात करूं, व्हाट दे वांटेड, व्हाट देयर मेन पर्पस वाज फॉर दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से war, or what their strategy, what their expectation from this particular attack was simple. They had this particular 3 day strategy. Ki within 3 days, right? We will kill the supreme leader of Iran, and the way the other people, the public in Iran was opposing the supreme leader and current regime. है ना. उनका ये मानना था कि आफ्टर द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर, the people of Iran will be on the road and they will change the regime from them for themselves. And American can put their puppet or proxy on the Iran. But ऐसा हुआ नहीं. After the death of a supreme leader of Iran, the Iranian public and their sentiment started going toward the Iran more. Not only Iranian, but other Islamic countries also started having a proper emotional and mental support toward the Iran. For example, अगर मैं तुम सीधे मैं बोलूं तो Saudi Arabia is there and Qatar is there. They have officially made a statement that they are not going to get involved into the war against Iran.
They decided they directly are not going to get involved into the war against Iran. So problem was this is the month of Ramadan, right? And Ayatollah Ali Khomeini is considered as the largest Shia leader in the world, the biggest, the most respected authority on the Shia leadership in the Shia Muslim group, right? And he was assassinated on his compound. सो एक इमोशनल सपोर्ट मिला पब्लिक जो है वो थोड़ी सी गुस्से में आई एंड दे स्टार्टेड शोइंग सपोर्ट टुवर्ड द Iranian leadership. This was the same public which was opposing the leadership a few days back, and they were protesting, and there was a huge crackdown by the current regime. So जो करंट सिनेरियो है अगर मैं मार्को रोबियो की बात करूं तो they had this 3 day strategy that we will kill the supreme leader, the public will take over, we will put a proxy of America on that particular country, the operation ends. The things actually get out of hand. Now, Iranians, after the death of their supreme leader, they are not ready to listen anything. मैं अभी just like live के 5 मिनट पहले I saw one of the particular tweet from Al Jazeera news की link थी अभी पढ़ा तो नहीं मैंने पूरी तरह से but they said Iran decided not to go for any talk or ceasefire while Americans want to have a talk on ceasefire. और इसके पीछे का बड़ा सिंपल रीजन है, राइट? जो व्हाइट हाउस है, अगर मैं इफ यू आर नॉट फॉलोइंग न्यूज़ प्रॉपर्ली, कल एक अमेरिकन कर्नल है, क्या नाम है उनका, एक बहुत फेमस इंडियन जर्नलिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। हम्म, आ जाएगा अभी नाम धीरे धीरे आ जाएगा वी विल गेट द नेम ऑफ दैट इंडियन जर्नलिस्ट ही वाज इन देयर शो एंड ही द कर्नल द अमेरिकन कर्नल जो थे ही वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द लाइक advisors on the foreign policy, but he denied that post, so you can understand the kind of authority and the kind of knowledge that person was having. He clearly mentioned that Americans never won a long-standing war after Second World War, after 1945. So he gave a proper example. For example, Vietnam, the American didn't win. Afghanistan, they have to run, right, in panic. The Syrian war, no result. Iraq was kind of okay successful, but they had faced huge casualty. So Americans never won a long-standing war against a very small country like Vietnam, right after 1945. That is the Second World War. And if this particular Israel, Iran, and US tension like is going for a long-standing war, then Americans are again going to lose. He also mentioned certain point. है ना पॉइंट्स में जो आया है मैं सीधे बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक लॉस he mentioned a single drone, Hamas drone, जो है वो to produce that America spent $4 million, while a simple kamikaze drone produced by the Iran causes only 3,000 to $5,000. So they have already shot down four of their drones. That clearly means they have almost like made a loss of 16 to 20 million. Right? That those are the four confirmed crashes of the American drones. Not like जो extra हुए होंगे उनकी कोई वो नहीं है. Then they have shot down three F-15. Another loss. So economic loss is in favor of America. वो अमेरिका को ज्यादा हो रहा है. Iranians को नहीं हो रहा है. Second thing, the stockpile. The Americans' interceptor missile producing capacity is 3 to 4, and the defense in America is privatized. तो उनका ये मानना है कि जब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तब तक हम क्यों प्रोड्यूस करें. So overall capacity of interceptor missiles of America is like close to 100 a year, while 100 interceptor missile is produced in Iran in a month. Similarly is with the Israel. Israelis production cost is high. Israelis what we can say production rate is low. So they might face a loss, huge amount of loss. That is the reason that this is the very first time when Americans are willing to talk on ceasefire, not Iranians. Iranians, on the other half, they had their own strategy. Iranians को पता था कि अमेरिका और इजराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता. So they diversified their deposits of missiles. They diversified the decentralized command.
अब अगर ईरानियन लीडरशिप खत्म भी हो जाती है, बहुत सारे लीडर्स भी मर जाते हैं, तो दे हैव डिवाइडेड एंटायर ईरान फ्रॉम 31 तो या 35 डिफरेंट कमांड्स, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हैं। दे विल हैव ऑटोनॉमस स्टेटस एंड दे कैन एक्ट ऑन देयर ओन इंटेलिजेंस। अगर अमेरिका को ये लगता था कि छोटे से टाइम पे वो कर लेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर। और अमेरिका को लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर जीतना नहीं आता। 1945 से अब तक उन्होंने एक भी लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर नहीं जीता है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। ये वो पर्टिकुलर गले की हड्डी है जो अमेरिका से ना चबाया जा रहा है ना थूका जा रहा है। तो याना का क्या कहना है? देयर आर मेनी रील्स एंड पोस्ट रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। याना बच्चे, आई विल गिव यू वन मोर पर्टिकुलर सजेशन। प्लीज डू नॉट बिलीव एनी इंफॉर्मेशन, right, that is coming out, or any reels that is coming out. I'll tell you why. Because Iranians are facing loss. You can find this particular thing at all the places, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, बट Israelis are facing loss, ये तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, बट दे आर फेसिंग loss. नाउ अंडरस्टैंड, रिसेंटली अभी जो मैंने अभी जस्ट लाइव के पहले कुछ न्यूज़ पढ़ा, कुछ अपडेट्स पढ़े थे। तो इन दोज अपडेट्स, the Americans are having close to 21 small and large military establishment bases in Middle East itself, but they are using the base of Cyprus. I mean, साइप्रस से अगर आप एयरफोर्स भेजना चाहते हो, तो हो सकता है आपको एक दो बार रिफ्यूलिंग करानी पड़े। Why? According to the defense experts, उनका मानना है कि जो ये 21 establishments हैं, military establishment मिडिल ईस्ट में, right, they are either being damaged or non-operational, and third thing, जिन countries में हैं, they are not agreeing to go against the Iran। एक और थ्योरी है, टॉक कार्लसन करके एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि Iranians are not attacking on Saudi Arabian or Qatar, the gas and oil infrastructure. It's Israeli who are attacking it because they want that Saudi Arabia, Qatar, and some other country directly join the war against the Iran so that they can defeat Iran। राइट, सो अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन वो है जो फिल्टर्ड होके आ रही है, दैट इज गोइंग टू सपोर्ट आइदर ऑफ द साइड। सो एक रियल इंफॉर्मेशन सेटअप जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, बट things are getting into the print media better than social media and digital media. So I believe if you want to get a correct information, you should follow the major newspaper। मेरा दोस्त तो पूछ रहा है कि पढ़ाई कंटिन्यू करना है या नहीं। अच्छा, यू हैव टू कंटिन्यू स्टडी, राइट। ट्रस्ट मी, इंडियंस बहुत टफ होते हैं, इंडियंस बहुत वो होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। वी आर रेडी फॉर वर्ल्ड वॉर 3 4 5। वी आर रेडी फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग, एंड स्टडी तब भी पैरेलल चलती रहेगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अभी के टाइम पे एक लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर देखने को मिल सकता है। United States goals was to neutralize the Iran's nuclear and missile threat to prevent the nuclear weaponization. Israel leadership framed the strikes as necessary to the stop of an existential threat and preemptively degraded the Iran military capability. Targets include Iranian missile system, nuclear associate site, senior military leadership located in Tehran and elsewhere. तो उन्होंने एक सोची समझी एक प्रिसाइज स्ट्राइक करी थी, ये सोच के कि जल्दी मामला खत्म हो जाएगा, बट वो जल्दी होता हुआ दिख नहीं रहा है। Now, what exactly happened after that particular attack and escalation? Look at this meme. This was actually circulating at Twitter and Reddit at all the places. And this was not just Indians who were circulating, American account, Israeli account, and Western Asian account, YouTubers, comics, politicians, journalists, they were spreading this particular meme, right? In which Israelis are convincing USA, let's go in and out, 20-minute adventure. So, as I told you, that it was Israel who convinced America this is going to be a 3 days exercise in which we can change the entire regime. But that is turning out to be that decision. So, what exactly happened after the death of Supreme Leader Ayatollah Ali Khomeini? Iran launched a retaliatory missile and drone attacks against the US bases, allied sites in the Gulf region, including the possible hits on US mission, US, sorry, embassy in Riyadh. Iran's Islamic Revolutionary Guard declared all the US and Israeli military site legitimate target.
Iran aligned Hezbollah in Lebanon fired missile and drone at Israel, prompting Israeli airstrike in the South Lebanon. Civilians have been killed in these exchanges, generating significant humanitarian concern. Right. Israel defense system is missile intercepted inbound attack, mobilized the reservist and issued evacuation warning to the northern border areas. The problem here is that after the death of Khamenei, people actually thought कि Israel यहाँ surrender करेगा, but they decided not to do that. तो इजराइल जहाँ पे भी है, राइट, अगर मैं इसराइल के मैप के हिसाब से देखूं, तो ईरान का एक फ्रंट जो है वो इधर से तो है ही है, राइट। दूसरा फ्रंट जो है वो लेबनान की तरफ से खुल रहा है, एंड हूतीस की तरफ से अपने एक फ्रंट और खुला है। जस्ट लाइक अभी आने के 2 घंटे पहले की न्यूज है कि हूतीस दे आल्सो स्टार्टेड properly the weapon support to the Iran. So for now, Israel is facing three different front, right, from the three different directions. So Israel के लिए एक problematic situation बन रही है. The Iran is not ready to surrender or ceasefire. They are simply doing one particular thing. You are sending missile on our infrastructure. We'll wait for some times. After 3 4 hours, we will target your 12 13 building, and then you will do it again on the next day. We will do it again on the next day, and we will keep this war stretching and stretching and stretching until and unless आपकी supplies जो हैं, जो interceptor missiles हैं, जो आपके दूसरे supplies हैं, they got compromised. तो ये एक ईरान की अच्छी स्ट्रेटेजी है ना, ईरान को बेनिफिट करेगी, अमेरिका को ज्यादा लॉस करेगी। नाउ आफ्टर द अटैक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, द रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स किस तरीके से चेंज हुए। द कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्बेड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज ट्रैफिक, a crucial choke point for a global energy supply. Iran threats to close it have highlighted the oil market volatility, right? Aviation regulators, including India's DGCA, want airline to avoid airspace near conflict zone, affecting thousands of international flights, right? Insurance risk profit, etc. Iran has launched a wave of ballistic missiles and drones targeting Israel, especially Tel Aviv, Haifa, Base Shemesh, US military bases in Bahrain, Qatar, Kuwait, and UAE. Make sure ये जरा ध्यान से सुनना कि we are talking about USA military establishment. All right, we are not talking about any of the civilian infrastructure or the state-owned infrastructure from these countries. Right, U.S. embassy in Riyadh was struck by the drone, and embassy compound in Kuwait was reportedly hit. A luxury hotel in Dubai, that is Fairmont the Palm, an airport in Dubai and Doha sustained the damage. ये इसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ कि जो दुबई है, जो दोहा है, यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, सऊदी अरेबिया की जो स्टैब्लिशमेंट है, उनमें ऐसा माना जा रहा है कि अटैक ने इजराइल ने खुद करा दिया है, जिससे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ये सब ज्वाइन हो जाएंगे इसमें वॉर में, बिकॉज दे हैव स्ट्रिक्टली मेंशन्ड दैट दे आर नॉट गोइंग टू जॉइन द वॉर डायरेक्टली अगेंस्ट द ईरान, राइट। Israel heavily bombing the Beirut and South Lebanon after Hezbollah joined the war in response to Khamenei's death. So वहां पे भी एक front खुल चुका है. And this is continued. This is a map presented by Al Jazeera. These are the sites जहां पे bombarding हुई है ईरान में. So Tehran becomes one of the major spot. Right? Tabriz, Urnia, Zarazan, Karaz, Darawand, Karmashas, Fiam, right? Lospi, Ifshahan, Shiaz, Bashar, Menab. तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लंबी चौड़ी में वो हुई, एंड मिनाब वाज द सेम प्लेस जहाँ पे एक गर्ल्स के ऊपर, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, जहाँ पे क्लोज टू 200 गर्ल चाइल्ड डाइड। अभी आज मैंने सुबह के टाइम पे ट्विटर में एक फोटो देखी थी जहाँ पे सीरीज ऑफ ग्रेव्स टेक की गई थी फॉर दोज गर्ल चाइल्ड। सो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता जा रहा है मामला। नाउ इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या कहता है, ठीक है, राइट, आई नो। जब मैंने इंटरनेशनल रिस्पॉन्स सर्च किया था ट्विटर में अगेंस्ट दिस, this was the meme that came from several accounts. I mean, North Korea, who's against Americans, they have nuclear weapon, and nobody is inviting them to the war. But they can do anything. But what is international response? अगर मैं उसकी बात करूँ तो what was there? So, जो emergency UN Security Council session saw condemnation of multiple sides. UN chief warned the broad conflict. Some members criticized US and Israeli action as a violation of international law, and Iran accused them of the war crime.
टेक्निकली इट्स अ वॉर क्राइम क्योंकि यहाँ पे सोवरेन लीडर को मारा गया था. China condemned the US strike and urged diplomatic resolution, warning of a broader instability. Other major actors like Russia, EU state called for de-escalation while condemning the attacks on civilians. Now, majority of लोग जो है इंटरनेट पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं कि why China is not supporting Iran. तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देते हैं हिस्ट्री की. China never supported Iran on the direct conflict or directly or indirectly. Even the last year, when mid 2025, they have seen the 12 days war. China supported Iran in the help of, in the name of financial support and some other technical aspect, but directly join करने का उसका कोई सीन नहीं था. For now, even they don't want to join it directly, right? एंड दिस इज नॉट समथिंग कि जो सही होना चाहिए. फिर चाइना के बाद जो प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर है, दैट इज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, राइट. दे अलाउड अमेरिका 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 फॉर द ब्रिटिश मिलिट्री बेस फॉर द डिफेंसिव स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान. इसको हम ये नहीं मानते हैं कि द ब्रिटिश ज्वाइन द फाइट विद अमेरिका अगेंस्ट ईरान. They just authorized and allowed Americans to use their base in क्या कहते हैं Diego Garcia against that particular thing, but they are not directly getting involved. They are not sending any men, troop, or any kind of machinery. France, on the other half, they want they all also they never directly supported America, but they are against the Iranian nuclear program. Right? Iranian nuclear program against China bhi tha. China never wanted Iran to have a nuclear weapon, so that is another reason why China is not supporting directly. China ने कई जगहों पे कई इंस्टेंस पे ये बात बोली कि we don't want Middle East to become the battleground and instability हो, as that is the reason कि nuclear program de-escalate होना चाहिए. और फिर for now the way we have seen trade war, tariff war, China want to have a balanced approach against the Americans, so इसलिए भी वो नहीं कर रहा है. Talking about the public opinion, how this particular thing is shaping or changing. Polls predicted a majority American opposes the war, with only 25% favoring it, right? In even in America, the American population is not approving this war. Only 25% के आसपास लोग जो हैं वो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं. Debate in Washington and Congress are intensifying over the strategy and authorization. Now the thing is कि if this is escalating into a full scale war, वॉर के बारे में ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले कांग्रेस को दी जाती है एंड देन उसके बाद वो स्टेप लिया जाता है. But this time again Donald Trump violated that rule and unilaterally decided to go against the Iran. Iran's new leadership has refused negotiation with the US, rejecting engagement shortly after the assassination of Khamenei, right? And public opinion is in favor of them in their country. Some nations, Indian authorities are monitoring the domestic communal tension linked to the conflict and urge the vigilance. US State Department has urged all Americans to depart from more than dozen Middle Eastern countries immediately. ये जो पॉइंट है ये भी ये पर्टिकुलर चीज बताता है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी सेंटिमेंट जो है वो ईरान की तरफ ही है. राइट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा, अफगानिस्तान के साथ हो रहा, इसराइल ईरान हो रहा, वॉयलेंस हो रहा, रशिया यूक्रेन हो रहा, कहीं सिविल वॉर हो रहा, इंडियंस आर चिलिंग हैविंग सिपिंग टी. सो अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि भैया पढ़ना बंद कर दे तो मत करना, है ना. चलो मूविंग ऑन कि अब उसका जो इफेक्ट है वो दुनिया भर में किस तरीके से पहुंच रहा है. इकोनॉमिक एंड ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास बढ़ चुके हैं जब मैं अभी आया हूं तुम्हारे पास लाइव उसके 1 घंटे पहले. राइट. स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो क्लोज है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ग्लोबल ट्रैफिक है, जो शिप ट्रैफिक है, ट्रेड ट्रैफिक है, उसका लगभग 25% जो है वो क्या है, डाउन है. फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो स्टॉक्स, बॉन्ड एंड इमर्जिंग मार्केट करेंसीज दे हैव शोन वॉलेटिलिटी. राइट. इंडिया के बाहर के स्टॉक मार्केट दे हैव शोन द डिप. Gold prices are getting higher, oil prices are rising. So दुनिया भर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. टॉकिंग अबाउट वन थिंग जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, राइट. ईरान में नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन बट ईरान हैव न्यूक्लियर फैसिलिटीज विद एनरिच्ड यूरेनियम नॉट अप टू द वेपन ग्रेड फॉर नाउ. राइट. सो अगर कंटिन्यूस स्ट्राइक्स होते रहते हैं तो देर आर चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग रेडिएशन अक्रॉस दैट जियोग्राफिकल रीजन. So जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, they are concerned about the situation.
They said कि for now we don't have any abnormal irradiation level at the sites, but this can actually come on the negative aspect. So yes, बच्चे लोग ये एक बहुत लंबा चौड़ा और बहुत क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। कुछ चीजें डिबंक कर देते हैं जो कि जरूरी है। क्या ये वर्ल्ड वॉर थ्री की बिगिनिंग है? न्यूज चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले, दे विल से यस, राइट, बट जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग नो, and they said this is going to be a regional war in which people will damage their infrastructure, each other's infrastructure, until and unless there is a real existential crisis to Israel that is not converting into World War III. Right? Next, क्या इसमें कोई जीत रहा है? The answer is Iran seems to take a lead, but after the war, we will understand that nobody wins. जब वॉर खत्म होता है तो यू रियलाइज यू लॉस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू लॉस्ट पीपल इन दैट पर्टिकुलर वॉर। सो ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला कि कोई जीतेगा। हारने की बारी है तो ईरान लीड कर रहा है फॉर नाउ। अमेरिकन एंड इसराइलीज दे सीम्स टू बी ऑन लाइक losing side in terms of finances and other thing, but let's hope for the best. We get the peace talks on time. We get this particular things done earliest possible. And कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो दुनिया भर को इम्पैक्ट करती हैं. So we don't want कि ये लंबा चले. So third thing, should you stop studying for exam? The answer is no. पढ़ते रहो, तुम्हारा एग्जाम होगा. So that was the current update of Israel, America, US, sorry, America, Iran conflict. Right? जो अब तक हुआ है, जो अब तक theories आई हैं, जो अब तक misinformation आई हैं, जो information है. Right? Let's move to the next most important topic, that is Arvind Kejriwal case. Yes, 2021, 2022 Delhi excise policy case. Right? इस पर्टिकुलर केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एंड अदर 21 अक्यूज, इन सबको जो है क्लीन चिट दे दी किसने? दिल्ली कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने, अगेंस्ट द सीबीआई केस। राइट, सीबीआई के केस में उन सबको बरी कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई, एंड इट्स अ मेजर लीगल विक्ट्री फॉर द अरविंद केजरीवाल। केशव सर ने एक डिटेल में इसका शायद कवर किया है, बट फिर भी हम थोड़ा सा वर्डिक्ट जो है उसको हाईलाइट करेंगे। So special judge Jitin Singh, yeah, right, of the Rouse Avenue Court stated that the Central Bureau of Investigation failed to provide cogent evidence on the overarching conspiracy or a criminal intent. तो सबसे पहली चीज तो उन्होंने यही बोली कि सीबीआई के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, कोई ऐसा पर्टिकुलर एविडेंस नहीं था जो क्रिमिनल इंटेंट को क्या कर सके, प्रूव कर सके। The criminal intent is not being proved. The court also rapped the CBI for relying on conjecture and surmises instead of a solid proof. So उनका ये भी मानना है कि भैया assumption जो है, he clearly mentioned this. To in clean sheets, that clearly means कि lower court understand that their involvement is not there. They are clean from their acquisitions. Okay. So even he mentioned this, Jitin Singh, the special judge, that assumption in an investigation kills the investigation, and you have primarily assumed that they are the criminal, they have criminal intent, and you, what we can say, try to approve that particular theory from generated from your mind without solid proof. It also questioned the practice of turning accused individual into the approvers to fill the gap in the narrative. तो उन्होंने बोला कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में भी गैप थे, आप जो प्रूवर्स थे उनको उठा के क्या कर रहे थे, एक गैप फिल कर रहे थे। Along with Kejriwal and Sisodia, court cleared 21 other people, including the BRS leader K. Kavita. So Arvind Kejriwal, that is former Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, former Deputy Chief Minister of Delhi, उनके साथ साथ बीआरएस लीडर की कविता एंड 20 अदर्स जो हैं उनको क्या कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई, उनको क्या कहने की क्लियर कर दिया गया। फिर the court went as far as ordering the departmental proceeding against the CBI investigating officer for the lapse and the probe. So कोर्ट ने ये भी बोला कि जो सीबीआई ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसके अगेंस्ट आप एक प्रोब बैठाइए, एक जांच कमेटी बैठाइए कि इज दिस द काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे आर डूइंग। The problem is quite simple. From last several years, the opposition is accusing the ruling government
to misuse of the agencies like ED, CBI, right, IT, and this is one of the classic case of political vendetta that look like. कहीं ना कहीं पे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो करने की कोशिश की गई, बट दैट टर्न्स आउट टू बी क्लीन. हमारे पास जुडिशरी है, जुडिशरी इज ऑलवेज लाइक जुडिशरी ऑलवेज वर्क्स. तो दैट इज हाउ द थिंग्स हैपन. उन्होंने लाइक जो पॉलिटिक्स है वो कहती है कि द टाइमलाइन ऑफ द केस इज क्वाइट डिफरेंट. The case was of 2122. You arrested Kejriwal and Sisodia before the general election and before the Delhi election to prove them as corrupt. And similar sort of events are happening. There were people who were making fun. The Tamil Nadu election is there, so they are going to put the Chidambaram behind the jail. Kerala election is there, so they are going to put this particular person behind the jail before election, something like this. बंगाल इलेक्शन के पहले जो आईपैक वो थी एजेंसी थी, वहां पे ईडी की रेड मरवा दी. ममता बनर्जी स्टोल देयर डॉक्यूमेंट कि नहीं भैया हम अपने डॉक्यूमेंट नहीं देंगे. सो देयर वो पॉलिटिकल आउटरीच कि भैया कहीं ना कहीं तो आपको ये प्रूव होता दिखता है कि द करंट रूलिंग गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग द एजेंसीज. We believe until and unless we have a strong judiciary, nobody can misuse it. But let's hope for the best. Now, what is the next step of legal and political development? Just after the hours of judgment, सीबीआई ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, है ना, और दिल्ली हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करेंगे. Right? Discharge claiming that the crucial aspect of investigation were ignored and inadequately considered. The बीजेपी leader started saying कि everybody knows कि किस तरीके से proofs destroy किए गए, किस तरीके से मोबाइल फोन destroy किए गए, but CBI was not aware of it. तो तो उन्होंने बोला कि हम हाई कोर्ट जाके बताएंगे. लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो कि बेसिकली सीबीआई के प्रिडिक्टेड ऑफेंस पे था, वो भी अब कमजोर हो जाएगा. सो देयर वर टू केसेस. वन ऑफ देम वाज ऑफ सीबीआई, अनदर वन देम वाज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ द ईडी. सो अब उनका ये मानना है कि चूंकि सीबीआई का केस जो है वो बिगड़ चुका है, राइट, तो ईडी का केस भी बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं केजरीवाल एंड अदर पर्टिकुलर लीडर्स के साथ. Arvind Kejriwal, after this particular clean sheet, broke down to the tears and said clearly that कोर्ट मानता है कि मैं एक कट्टर ईमानदार हूँ, राइट, एंड मेरे अगेंस्ट ये इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई थी. सो अभी इसमें और बहुत कुछ होना बाकी है, right? Let's hope for the best that we get some positive update in the politics as well. So this is it for this week's current affairs. I hope तुम्हें यूएस ईरान इसराइल वाला easiest way में समझाने की कोशिश की मैंने, राइट, कि जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है एंड हाउ द थिंग्स आर, क्या है उसके मायने, क्या चल रहा है क्या नहीं. सो मेक श्योर कि स्टे ट्यून्ड एंड वील कम बैक नेक्स्ट वीक. एंड हम अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock रोज द हिंदू एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम पूरा न्यूज़पेपर जो है उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करते हैं एक घंटे के आसपास. सो इफ यू आर इनटू दैट यू कैन आल्सो ज्वाइन. एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. I wish you and all your loved one a good health, good mental health, and आप सभी को हैप्पी होली. एंड अब मैं जल्दी मिलता हूँ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. सी या गाइस. गुड डे.